Hi, I'm Rosie. My father and I, we both run the business together. When I first entered the business, my parents they sat me down and बंगाली में एक कहावत है कि हम आपके लिए कुआं खोद के दे रहे हैं अब आपको बस पानी निकालना है. So they basically created a base for me and now I just have to expand on it. When it comes to my role, I don't do one thing in particular, but I take care of the entire management from procuring to delivering. So basically, I'm just filling in my father's shoes. So, we come from a very humble background. My father worked in the steel industry for more than 15 years. But back then, we were barely making our ends meet. That is why he left for Kuwait. But he fell sick over there and mostly homesick. That is why he decided to come back and do something over here and wanted us to have a better lifestyle. So that is why he decided to open a sweet shop, and I have witnessed the hard work and commitment he has put to get the restaurant where it is today. Because initially we just had the sweet shop and my parents had a Bengali tiffin service from home. So back then Scooty played an integral role in the logistical support. मैं 1980 में कलकत्ता से बॉम्बे आया। डिग्री करने का बाद में मैं 5 साल बॉम्बे में था, मुलुंड में। उसके बाद में मैं पुणे में इस्पात प्रोफाइल्स में जॉब किया। 2000 में वो कंपनी बंद हो गया था, लॉकआउट हो गया था। बाद में मैं कुवैत गया, कुवैत पे जॉब किया, लेकिन मेरा तबीयत बराबर नहीं था। बाद में मैंने क्या किया, वापस आया। वापस आने के बाद में मैंने सोचा इधर तो कुछ करने पड़ेगा। तो मैंने ये एरिया का अंदर बंगाली स्वीट का कोई दुकान नहीं था, तो मैंने उनको डेवलप करके बाद 2-3 साल का बाद में मेरे मिसेस का मदद से मैंने फूड का भी खाना उना, ये रोल, काटे रोल, ये सब चालू किया। बाद में बिरयानी भी चालू कर दिया। इसको डेवलप करने के लिए तो सिर्फ तो बिजनेस करेगा तो उधर बैठ के नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, एक TVS स्कूटी लिया। बाद में क्या हो गया, जो मेरा बिजनेस बढ़ने को लगा तो मैंने और एक TVS लिया, जो खुद के लिए और मेरा जो डिलीवरी बॉय था उसके लिए लिया था। तो वो लेने के बाद में मेरा बिजनेस भी बढ़ गया, मेरा एरिया भी डिलीवरी करता था। My father swears by the Scooty's reliability to the extent that we as a family not only own one but 4 Scooties. It is truly a value for money product. The mileage is great even in traffic-filled city like Pune, and the maintenance cost is pretty low too. Our Scooty not only takes us from home to work, but we use it for just about all our travels, made to buy our raw material or manage deliveries. This Scooty has not only made our lives simple, but it has been a companion on our entrepreneurial journey. देखो, Pune is a very crowded city. The traffic is very slow moving in most of the business areas, and I always need to go here and there for parcels and other things. So that is why Scooty fits the best for me. I have had TVS Scooty in my family from the past 14 years. TVS Scooty for me is easy, economical and a lot of fun.